What happens to the root mean square speed of the molecules in a sample of helium gas if the temperature is increased from minus 73 degrees C to 527 degrees C? A half, B double, C 4 times, D 1/4। इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करेंगे अप टू 527 डिग्री सी, so then what will happen to root mean square speed of the molecules in a sample of helium gas? ए में कह रहा है कि हाफ, बी में कह रहा है कि डबल, सी में कह रहा है कि 4 टाइम्स, डी में कह रहा है कि 1/4। मीन्स कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, हाफ हो इंक्रीज़ होकर हाफ हो जाएगी, या डबल हो जाएगी, या 4 टाइम्स हो जाएगी, या 1/4 हो जाएगी। इज वी नो दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड is equal to under root 3 kt upon m. It means root mean square speed is directly proportional to the square root of the temperature. So the temperature is given as minus 73 degree C and 527 degree Celsius. As temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in Celsius. So temperature in Celsius is minus 73 degree Celsius. So temperature in Kelvin is equal to 273 plus into minus 73. So 273 plus k or 73 minus. So temperature will be obtained as 200 Kelvin. Now we will convert 527 degrees Celsius into Kelvin. As temperature in Kelvin is equal to 273 plus 527. So temperature in Kelvin will be equal to 273, 200 or 500, 700 or 273 plus 27, 100 means 800 Kelvin. So the temperature is obtained as, the first one is 200 and second temperature is 800. So the difference between them means how much times temperature is increased. 200 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 800 मिलेगा. मीन्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स, 4 टाइम्स. सो द रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी, the root mean square speed will be directly proportional to under root 4. So 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2. So it will be double. So the correct option will be B, double.